Assalamu alaikum students. Biology class 9th, chapter number 1, Introduction to Biology. Today it is the last topic of this chapter. It is the concept of abiogenesis and biogenesis. So what is abiogenesis? It is the old concept. According to this, living things comes from non-living things. Aristotle presented this theory and he said that living things come from the non-living thing. Later on, Francisco Redi, he was also a French scientist, he negated this idea and said no, living things can only come from the living things. यानी कि बेजान चीज़ें जो है एरिस्टोटल का यानी अबायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ज़िंदा चीज़ें जो है वो बेजान अशियों से वजूद में आता है, लेकिन रेडी ने कहा नहीं, ज़िंदा चीज़ें ही क्रिएट करती हैं. So these are the two ideas of abiogenesis and biogenesis. So in the favor of biogenesis, Francisco Redi performed a series of experiments in which he proved that living things can spontaneously create only by living things. Okay, it is known as the Redi's experiment. The biogenesis was presented by Redi and the whole experiment is known as Redi's experiment. In his first experiment, Redi took some dead snakes in a box and he kept it open. The box is open. What happened that flies gathered around the dead snakes and after 3 days maggots appeared in their bodies. Maggots छोटे छोटे कीड़े जो आप देखते हैं, कचरा अगर थोड़े दिन पड़ा रह जाए तो छोटे कीड़े पड़ जाते हैं. It is the maggots. So maggots appeared in their bodies and after 18 days these maggots are converted into brown capsule like structure which is the pupa of the flies. Capsule like structures it is converted into. Then what Redi did that he collected these pupa and he transferred it into a glass box and covered it with a paper sheet. What happened after a few days, that 8 days after, a fly emerged from each pupa and all flies were similar to those which visited the dead snakes. 8वें दिन क्या हुआ, वो जो प्यूपा था ब्राउन कलर का उसमें से एक छोटी सी मक्खी निकली, बेबी फ्लाई, और ये बिल्कुल ऐसी थी जो कि स्नेक्स के ऊपर बैठी थी, तो उसी की बेबी फ्लाई थी. This one is the first experiment of Redi's. Yes, here look here. Here is the meat and the bottle is open and flies are gathering around the meat and they are laying eggs. This is the Redi's first experiment. So what was the conclusion? That maggots were the offspring of flies. ये maggots क्या थे, जो कीड़े पैदा हो गए थे डेड स्नेक्स के ऊपर, तो ये फ्लाइज जो मक्खियाँ बैठी थी स्नेक्स पर, उन्होंने अंडे दिए, अंडे से लार्वा निकला. लार्वा क्या था, वो मैगट्स था. मैगट्स फिर कन्वर्ट हो गया प्यूपा में और प्यूपा से बेबी फ्लाई. यू नो दैट इन योर क्लास 7 यू हैव स्टडी अबाउट द मेटामॉर्फोसिस. तो इट वाज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द फ्लाइज, जिसमें कि डिफरेंट एग से निकलने के बाद द इंसेक्ट्स गो थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस. सो फ्लाइज आर द इंसेक्ट्स. तो उसने स्नेक्स के ऊपर अंडे दिए, अंडे से मैगट्स निकले, मैगट से प्यूपा में कन्वर्ट हुआ, प्यूपा से बेबी फ्लाई. सो लाइफ कमिंग फ्रॉम ओनली द लाइफ. वो जो बेबी फ्लाइज थी, वो जो मैगट्स थे, वो फ्लाइज के अंडे से निकले. सो इट इज़ प्रूवन. नाउ व्हाट हैपन दैट critics said in the second experiment, Redi's second experiment, what he did, he took 8 bottles. 8 bottles लिए इसने. He put dead snakes in 2 pieces of meat and fishes in another bottle. 8 बॉटल लेके 4 में उसने डेड स्नेक्स रखे, 2 में इसने मीट के पीसेस रखे और 2 में फिशेस. फिर इसके बाद कैप द बोतल ओपन एंड 4 कवर्ड. 4 बोतलों को इसने खुला छोड़ दिया और 4 को कवर किया.
उसने क्या देखा कि मैगट्स अपीयर आफ्टर अ फ्यू डेज, ओनली मैगट्स अपीयर इन द ओपन बॉटल, नॉट इन द कवर्ड बॉटल में मैगट्स नहीं पैदा हुए और ओपन बॉटल में पैदा हुए। उसने कहा कि चूंकि ओपन बॉटल में फ्लाइज आकर बैठी थी इसलिए वो मैगट्स फ्रॉम द फ्लाइज हैं, लेकिन वो बॉटल जो कवर्ड थी उसमें फ्लाइज नहीं आई और इसी वजह से उसने अंडे भी नहीं दिए और उसी वजह से उसमें मैगट्स क्रिएट नहीं हुए। तो इसने कहा कि इफ़ द फ्लाइज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बॉटल द मैगट्स डिड नॉट अपीयर। मक्खियाँ अगर नहीं आई तो मैगट्स भी पैदा नहीं हुए। अच्छा, क्रिटिक्स ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, सम ऑफ द क्रिटिक्स, दैट यू हैव स्टॉप द एयर फ्रॉम एंटरिंग इन द कवर्ड बॉटल। उसने कहा कि हवा चूँकि ज़रूरी है और आपने हवा तो जान ही नहीं दी जिस बॉटल को कवर किया था 4 बॉटल्स को, तो ये इसीलिए नहीं हुई, हाँ लाइफ क्रिएट हुई कि आपने बॉटल को कवर रखा था। सो इन हिज थर्ड एक्सपेरिमेंट व्हाट रेडी डिड कि some pieces of meat were put in a bottle whose mouth was covered with a gauze। कुछ पीसेस रखे उसने किस पे, बॉटल में, जिसको जाली से उसके मुंह को बंद किया। जब जाली से गॉज से मुंह बंद किया तो फ्लाइज एंटर नहीं हो रही बट एयर इज एंटरिंग इनटू द बॉटल। फ्लाइज आर नॉट एंटरिंग बट एयर इज एंटरिंग। तो व्हाट हैपन दैट अगेन नो मैगट्स अपीयर इन द मीट, कोई मैगट्स पैदा नहीं हुआ। इसने कहा रेडिस ने कि आपका ऑब्जेक्शन था कि एयर नहीं जा रही इसलिए मैगट्स प्रोड्यूस नहीं हुए, देयर वाज नो मैगट्स, बट इन दिस एक्सपेरिमेंट he was allowing air to enter into the bottle, only flies were not visiting them। तो उसने कहा हवा भी जा रही है, still there is no maggot। So it is proven now that these maggots are the offspring, these maggots are the larvae of the flies and life comes only from the lives। So it is a series of Reddy's experiment known as Reddy's experiment। Again, look into the picture here. This is his first experiment, flask. In the first experiment where the flies are visiting into the meat. Next experiment, experiment number 2, where flasks are sealed and no flies are entering. And in his third experiment, flask covered with gauze, air is entering into the meat, into the bottle, but flies are not entering into the bottle. So there is no appearance of the maggot, and it is proven now that lives can only come from the living thing. It is this was the concept of biogenesis in favor of biogenesis. Reddy's concept is in favor of biogenesis. Now again there was another scientist, Louis Pasteur. Pasteur was also in the favor of biogenesis. It is the most common name you have heard, Louis Pasteur, who discovered the method of pasteurization of milk. So he also performed an experiment in favor of biogenesis. What he did, it is known as the Pasteur's experiment. And another scientist named Needham was in the favor of abiogenesis. He performed some experiment in the favor of abiogenesis. In my next lecture, I will describe what is Pasteur experiment and what is Needham experiment. I hope that you have understand my lecture. You have to I will ask some of the question in my next lecture, just a brief review, and for your judgment I will also ask the question in my next lecture. Okay, thank you for watching.